Okay, so in part 2, we are taking up the next newspaper, Financial Express. So let's see the new topics for us to be discussed. So India debuts in the EM bond index and entry into the JP Morgan index to be over 10-month period. So India and the world, अगर हम यहाँ comparison करें, so you can see India is at this place. India में जो yield है, that is average rate पे, yield is average for the index, but amongst the highest in the EM Asia. So 10-year government bond yield जो है Asia में, that is highlighted in the red. Asian countries की and other region is in blue. So you can see this is the almost Asia में जो हमारी highest level पे yield चल रही है government bonds की. So in a development that is likely to prompt foreign inflows into the country and deepen the bond market, Wall Street major JP Morgan announced Friday कि जो Indian bonds है, they will be included in the emerging market debt index. So this is one of the major achievements, and the move is expected to pave the way for inflows of around $25 billion. And inclusion, it will also occur without any tax incentives for the overseas investors. So again, ये भी एक major point of contention रहा, अगर tax incentives रहते तो we could see more major level पे और थोड़ा हमें boost मिल सकता था. But Indian government जो bonds हैं या government securities जिसको हम बोलते हैं, they will enter the JP Morgan's Global Bond Index Emerging Markets Global Index Suite, which currently manages around $236 billion in the global funds. So iske benefits and all of that, we have already talked about that in the previous part. So अगर यहाँ e-gaming firms के ऊपर taxation की अगर हम बात करें तो recently we see कि rupees 11,000 crores GST blow to Delta company to pursue all the legal remedies. So this is one of the second highest tax demands from e-gaming firms. So GST Council ने 28% of tax rate decide किया था, जो again अप्लाई किया जाएगा ऑन द फुल फेस वैल्यू ऑफ द बेट का जितना भी अमाउंट रहेगा, पूरी फेस वैल्यू पे टैक्स एप्लीकेबल रहेगा विदाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन गेम्स ऑफ स्किल या गेम्स ऑफ चांस. तो दोनों टाइप के, दोनों नेचर ऑफ गेम्स पे टैक्स एप्लीकेबल रहेगा. So demand against the Delta shows कि गवर्नमेंट इज स्टिकिंग टू दिस स्टांस ऑफ अगेन 28% टैक्स रेट ही अप्लाई किया गया है. एंड इवन कैसिनोज पे भी ऑब्वियसली टैक्स रेट एप्लीकेबल रहेगा. So यहाँ पे भी we can prevent money laundering, and again it is in a way gambling only. अगर हम gaming firms की बात करें, जिस तरीके से वो operate कर रहे हैं, जो भी games हैं, this is not we can say adding to the productive value of the economic growth. And again यहाँ पे भी we are seeing major attraction जो है, that is the youth. So demographic dividend की instead of focusing upon their quality in terms of enhancement of their skills, if they would be more persuaded by this gaming industry, that would be again impacting the quality of the demographic dividend. So if we talk about India's growth momentum, that remains intact. तो globally अगर हम Indian growth momentum की बात करें compare with the developed world countries in Europe, so we see कि हमारा जो growth momentum है, that remains one of the strongest. We are able to sustain it. That is one of the major things. Market correction, that is एवर प्रेजेंट रिस्क, हमेशा ये रहता ही रहता है इस तरीके का रिस्क कि मार्केट्स करेक्ट कर सकते हैं, मतलब मार्केट्स कैन फॉल ऑल्सो, बट वो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो रिस्क जो भी हैं, दे आर इवनली बैलेंस्ड. सो अगेन दिस वुड बी वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर अट्रैक्टिंग इवन द फॉरेन इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी. सो इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, अप्रैल टू जून पीरियड की अगर हम बात करें 2023 में, so we are one of the fastest growing major economies. We have recorded a growth rate of 7.8% during this time period, followed by China, Indonesia, Mexico, Japan. Like as you can see, Germany में there's been negative growth. So Eurozone, is it really heading towards recession? एक वो दूसरा एरिया हो जाता है. चाइना में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, that is again one of the opportunities that can be leveraged by India. And जब हम private consumption और investment growth drivers की बात करें, तो gross fixed capital formation यहाँ पे green graph में डिपिक्ट किया गया है. यहाँ पे भी हमें fluctuations देखने को मिल रही हैं, बट अगेन एक हम बोल सकते हैं एक बैंड के अंदर इसको हम मेंटेन कर पा रहे हैं. एक्सपोर्ट्स
एक कंसर्न एरिया है हमारे लिए। एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो डॉटेड ब्लू लाइन है, दैट इज ऑल्सो यहाँ पे हमें लार्ज फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है, बट अगेन ये भी एक बैंड के अंदर, बैंड लिमिट के अंदर ही हम मेंटेन कर पा रहे हैं। सो इसमें भी थोड़ा अब हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ये दो मेजर अगेन फैक्टर्स रहते हैं which are responsible for driving economic growth, the private final consumption expenditure and again जब हम gross fixed capital formation मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। सो अगेन कंसर्न्स यहाँ पे एक एक्सपोर्ट सेक्टर अगर ब्रॉड लेवल की बात करें, राइज इन द ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन फ्रंट पे, दैट दीज आर सम द इमर्जिंग कंसर्न्स फॉर अस। बट ऐसा कोई इसकी सिचुएशन इसकी वजह से अभी इमर्ज नहीं हो रही है, बिकॉज एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजिलियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी या इवन आवर फाइनेंशियल सिस्टम, द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन डीलिंग विद दीज इमर्जिंग challenges. So इनको हम बोलते हैं high frequency indicators. So in a period again from July to August 2023, it reflects sustenance of growth momentum from the first to the second quarter with the GDP expansion the current financial year expected to be 6.5%. Risk हमारी evenly balanced है, so always risk रहता ही रहता है। अगेन यहाँ पे इतने सारे चीजें एक साथ ऑपरेट कर रही है इकोनॉमी में, तो कुछ फैक्टर्स हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ अगेन एज अ चैलेंज रहेंगे हमारे सामने। तो रिसेंटली डेफिनेटली इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन, द प्राइसेस दे आर स्टेडीली क्लाइंबिंग, दैट इज अ कंसर्न। मॉनसून डेफिसिट एक दूसरा कंसर्न है, सो दैट नीड्स टू बी असेस्ड। द अगेन यहाँ पे रिस्क कितना है इन चीजों में। And stock market correction, this is again, I just said it is part of the process. जो direct tax collection receipts, advanced direct tax receipts for the second quarter from again the current fiscal, from the companies and even the individuals, that has seen an increase of around 24%. तो even direct advanced direct tax receipts में भी हमें growth देखने को मिल रही है। And apart from this, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल फॉर्मेशन है, बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, एक्टिविटी इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर इवन दैट इज इंक्रीजिंग। सो ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे वी कैन एक्चुअली असेस कि हमारी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। एंड अगेन इसमें जी कलेक्शन, ई-वे बिल्स, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है उसमें क्या ग्रोथ चल रहा है, तो सब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं। एंड अगेन कहीं पे रिस्क है, बट अगेन दीज आर आल्सो इवनली बैलेंस्ड। Well, in this matter of oil price rising, I want to stress this thing that though multidisciplinary approach by the government of India is taken for a long time in the form of focusing on the renewables, focusing on non-fossil fuels like hydrogen, CNG-based fuels. But I think on the people, the impact of this, like we in Delhi, we had the odd even policy also. So somehow the oil prices every year, distorts the economy. So this is my suggestion. Please just have a view on this. That can't be not mandatory, but can't we focus on the CNG and the hydrogen based, commutation of our public vehicles as well as of the truckings and all, because the normal people are very much stubborn in focusing on the renewables, as because of the logistic cost, because of the infrastructure non availability. But can't we move towards the gas based commutation and the electric based commutation? Like for an example, every morning we see the trucks on the roads comes from far off areas into the mandis. So a lot of oil they use, a lot of diesel they use. So can't we, change their, and they can't change their mode. I mean, the trucks can also be, updated in the gas or let's suppose in the CNG based. Yes, so you're saying that we need to focus upon the behavioral change, and this can be made a part of the reforms of the logistical sector reforms that we are talking about. So this can be a good point, but यहाँ पे we need to focus कि how are we going to ensure कि हम इस change को implement कर सके ground level पे। तो electric vehicles
अडॉप्शन रेट को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फेम पॉलिसी, दैट इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग मोर सेल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए दी डेंसिटी ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी फोकस्ड अपॉन. तो कुछ हिंड्रेंसेस भी हैं साथ के साथ, बट ऑफ लेट वी आर ऑल्सो सीइंग कि जो इवन हमारा डिपेंडेंस क्रूड ऑयल के ऊपर वो विद टाइम इंक्रीज हुआ है, वो रिड्यूस होना चाहिए था या एटलीस्ट उसी लेवल पे रहता तो वी कुड हैव सीन कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, बट इंक्रीजिंग थोड़ा हमारे लिए एक अगेन कंसर्न हो जाता है. एंड ऑल्सो Yeah, एज on this part also, I'm saying that the government is consistently focusing on the normal peoples to adopt, the e-vehicles and the renewables under the FAME policy. But there is no as much emphasis and on the public vehicles, like on the buses. Every state we are having the transport department, so they are using diesel, they are using petrol. There is no emphasis on the e-vehicles or the hydrogen or the CNG based buses as we have in the Delhi. But yes, again, in that also, I would say कि the challenge है, that is again the fiscal, the financial challenge. इतना fiscal policy का वो part हो जाता है कि how much amount that we have, क्योंकि we have to also take into consideration कि fiscal deficit इतना ज़्यादा increase ना हो. And we can herein also cite the example of Delhi में जो public transportation system में we are including more number of electric buses. So this thing again can be taken into consideration by other states also, but at the same time rationalization of the fiscal policy that also needs to be taken into consideration and ensure कि fiscal deficit increase ना हो. So there are multiple things going on. Energy sector में we talk about again green hydrogen mission है, so gradually we'll see expansion एक time lag के बाद. And yes, these were the multiple points that we had to put up. Then joining the global supply chain India के लिए बहुत critical है. So herein we are having an interview by the member of Niti Aayog, and he's the former chief economic advisor also. So he feels कि जो center है it could trim the non-essential expenditure to meet the fiscal deficit target. Again ये हम even energy sector में भी we could write this thing कि जो non-essential expenditure है उसको हम कट कर सकते हैं. अगेन यहाँ पे हम टर्म जो यूज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, दैट कैन बी डन सो दैट फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी हम मीट कर सके. एंड अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे अगेन सब्सिडी एक्सपेंडिचर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज वन सजेशन दैट ही हैज पुट फॉरवर्ड. एंड ही आल्सो पुश्ड फॉर द 3-tier जीएसटी सिस्टम. तो जीएसटी सिस्टम में जो रिफॉर्म्स हैं वो भी किए जाने चाहिए. 3-tier जीएसटी सिस्टम आना चाहिए, या एज जैसे कि 1 टैक्स रेट होना चाहिए जहाँ पे 75% जो गुड्स रहेंगे दे वुड बी अट्रैक्टिंग एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्सेशन, एंड एग्जेम्पशंस जो रहेंगी दे वुड बी देयर फॉर अ क्लच ऑफ एसेंशियल आइटम्स. जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस रहेंगी. सो ऑन इंडिया नॉट बीइंग अ नेट बेनिफिशियरी जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है, अगेन यहाँ पे ये भी एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन रहा है फ्रॉम द पास्ट. जो पास्ट में हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए लाइक विद जापान, अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को असेस करें तो वी सी की after the signing of those agreements and passing of so many years, still हमारा जो trade है with suppose Japan, वो इतना massively increase नहीं हुआ है, specifically because of the free trade agreement that we signed. So अभी जो हम इतना focus कर रहे हैं on signing the bilateral free trade agreements, तो उनको हम कैसे different बना रहे हैं, या किस different चीजों पे, different factors पे focus कर रहे हैं so as to ensure कि they become a success. Like again जो हमने पहले आसियान के साथ साइन करे, वर्मानी who is also the executive director of the IMF, उन्होंने भी ये बोला कि जो key problem है for the country, is it not yet fully integrated with the global supply chain. तो यहाँ पे भी again this is the major points की major important point कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पीछे सक्सेस इतना मेजर सक्सेसफुल ना होने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि इंडिया वाज नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल सप्लाई चेन. सो दिस कुड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस, एंड दिस इज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अगेन रिमेंबर. एंड इसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है कि कैसे अब हम इंश्योर कर सकते हैं कि इंडिया बिकम्स अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन. सो ओवरऑल ये अगेन इंटरव्यू इस आर्टिकल का जो समरी है, this was this thing. And Pravesh, if you want to add up something, you can add. No, we can continue on this. Okay, and global supply chain, again integration with the global supply chain की जो importance हमें समझ में आई है, that was one of the lessons
after the COVID-19 pandemic, जो हमें समझ में आया कि dependence upon just one country for again key raw materials हमारे लिए again वो एक risky situation create कर सकता है. तो diversifying our trade partners and being part of the global supply chain becomes important for India. एंड ऑल्सो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की हम बात कर सकते हैं कि चाइना में अब इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. तो इवन चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में वी आर सीइंग कि दी कंट्रीज दी कंपनीज जो हैं वो चाइना में अपनी प्रेजेंस मेंटेन कर रही हैं, बट इवन दे आर लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाइंग देयर ट्रेड पार्टनर्स और कंट्रीज जहाँ पे वो अपना बेस को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि वो सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे. So these are some things which are related to this area. So India Canada जो relations में we are seeing tensions growing up, उसका impact definitely hospitality sector पे हमें देखने को मिलेगा, tourism sector पे देखने को मिलेगा. So travel curbs जो impose किए गए हैं, they would be impacting this in negative sense. So India's का जो goods trade है with Canada, we try to understand that and the trend in that specifically. So since 2018-19, we are having the export and the import numbers. So if we try to understand the exports from India to Canada, so we are seeing कि उसमें gradual हमें increase देखने को मिला with the time, with over time since 2018-19 till 2022-23. And when we talk about the trend in imports, तो पहले imports बहुत high level पे थे. Gradually हमने देखा कि जब COVID-19 आए तो imports definitely कम हो गए naturally because of COVID-19. उसके बाद imports they started rising up again. So again trade sector पे भी we can expect certain negative impact. Major item of export or import क्या है? When we talk about trade between India and Canada, तो major items of exports that includes marine products हैं, organic chemicals, pharma, plastics, clothing and apparel, iron and steel and machinery. तो ये 3 या 4 जो major area हैं, that is pharma, clothing and apparel, iron, steel and machinery. And major items of import में we have mineral fuels highest हैं. Then we have fertilizers, paper and pulp. These are some of the major areas where items that we import from Canada. And even FDI की बात करें between 2000 and 2023, तो 2 decade के numbers we are having. So FDI में यहाँ पे इंडिया में कितनी FDI from Canada? That was $3.3 billion and इंडिया ने invest किया around $2 billion. So यहाँ पे भी इंडिया को ज्यादा benefit हुआ है from Canada. तो यहाँ पे भी again we can expect some negative impact आने वाले time में FDI definitely fall हो सकती है. एंड इवन कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली शेयर मार्केट की, तो कनाडा पेंशन फंड है जिन्होंने अगेन एक मैसिव अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, तो वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट अ मेजर सेल ऑफ फ्रॉम देम एज वेल. यहाँ पे मेंशन भी है कैनेडियन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग द पेंशन फंड्स दे फाइंड लुक्रेटिव रिटर्न्स इन इंडिया बट दे माइट एग्जिट बिकॉज ऑफ द टेंशंस फ्लेयरिंग अप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा. सो कल हमने सेम टॉपिक पे बात करी थी कि जो इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग रेट्स डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, या वो रीजन नहीं है. द रीजन इज कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में हमें चेंज देखने को मिल रहा है, दैट इज व्हाई द सेविंग्स रेट इज फॉलिंग. मतलब लोगों की जो सेविंग्स थे उन्होंने वो spend करी है in buying more number of cars and buying homes. So it is because of this region changes in the consumer preference why the savings rate is falling. So net financial assets जो हैं वो increase हो रहे हैं. And if we talk about this ratio of household savings to nominal GDP ratio, so वो भी एक constant level पे maintain हम कर रहे हैं. So net fiscal assets जो add किए, we have the numbers जो steady double digit growth थी housing loans में, वो भी increase हो रहे हैं because obviously जो number of home sales realty sector है वहाँ पे हमें growth देखने को मिल रही है. And NBFCs में भी outstanding retail loans जो हैं they are for the purchase of vehicles. So that is not a sign of distress but of confidence. That people are showing up confidence and definitely अगर loans demand increase हो रही है, credit में growth देखने को मिल रही है, तो that is only because लोगों के पास इतना amount of again repayment option है, they are having jobs कि they would be able to pay back the loan amount. So this is not a sign of again economic distress का कोई sign नहीं है, and this is not a cause of concern for us. So Saudi Arabia से oil imports they plunged to multi-year low. तो यहाँ पे हमारे लिए शेयर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जहां से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, that we need to know in a chronological manner. हेरिन जो हाईएस्ट इंपोर्ट्स आ रहे हैं, they are coming from Russia, and ये चेंज हमें देखने को मिला after the Russia Ukraine war. Discounted
prices पे we have been importing crude oil from Russia and Saudi Arabia जो एक major important था वहाँ पे जिसका शेयर है वो डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है. तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन द क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फॉर अ शेयर ऑफ 85% एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी जो इंडिया में है दैट इज अराउंड 5 मिलियन BPD. तो लोन सैंक्शन रूल्स क्या हैं एंड हेयर इन वन ऑफ द केस स्टडीज की जो PTC इंडिया फाइनेंशियल है दे डेविएटेड फ्रॉम दीज लोन सैंक्शन रूल्स अकॉर्डिंग टू RBI. सो रिस्क ओवर द रोबस्टनेस ऑफ द गवर्नेंस फ्रेमवर्क. ऐसे एग्जांपल्स अगेन दे बिकम रिस्की for the robustness of our governance framework. So understanding जो company की practices थी, they have raised the concern over risk management किस तरीके से किया गया and the robustness of the governance framework. So company it has come under RBI scanner since 3 जो independent directors थे उन्होंने resign कर दिया from the board citing lapses in the governance and the compliance. So again उन्होंने इन allegations को deny किया है जो the former they appointed an independent firm to undertake forensic audit. So assessment में RBI ने जो की they have reportedly mentioned deeper operational issues at non-bank lender in addition to corporate governance lapses. So governance lapse में भी again उसकी वजह से भी we are seeing these are some of the reasons जिसकी वजह से loan sanction rules को violate किया गया. So हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो हैं दे आर एट नियरली 4-month लो. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, उनका शेयर कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. तो इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से दे फेल बाय अराउंड $867 million to nearly 4-month low. So total is around $593 billion in the week ended September 15. So foreign currency assets, it forms one of the components of the forex reserves. Special drawing rights, second component. Then our reserve position in the International Monetary Fund, and again, gold is also another component of. So RBI intervenes in the spot and forward markets so that's to prevent runaway movement in the rupee. तो अगर rupee ज़्यादा depreciate होने लग जाता है तो that is the time when RBI intervenes and it ensures or it releases more of dollar in the market. So the range volatility continues in the rupee as your global negative sentiments or domestic strength that keeps the rupee volatile in a range between 82.75 और 83.25. इस रेंज में हमारा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहा है. इसके अलावा when we talk about de-dollarization और internationalization of rupee, so that is another area where India is focusing कि अगर हम रुपी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस इंक्रीज कर पाएंगे तो even that would also reduce this volatile element in the foreign exchange reserve, because again डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस हमारी वो कम हो जाएगी. ओके, नाउ टेकिंग अप इंडियन एक्सप्रेस. तो वही टॉपिक्स लेंगे जो अभी तक हमने नहीं लिए. वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द थिंग्स. सो ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. So Delhi get its first clinic for the trans people, and this is a small step which takes away a giant stigma. तो जो social stigma associated है definitely this is a small step to break that, and definitely इसका impact हमें wider level पे भी देखने को मिलेगा. With time we can expect these clinics for the trans people expanding. And again, when we talk about what has been the other developments for the transgenders, so the major one has been the scrapping of section 377 of the IPC, which decriminalized homosexuality. And another issue that has been, we are seeing people have been demanding, specifically the people from LGBTQI plus community, is the legalization of the same-sex marriage. So debate around that is still ongoing, and abhi that is not legal as of now. But again, how we can ensure changing the behavior of the people, how we can make more inclusive society. So this is again a small step towards that.
So nation salutes Nari Shakti Vandan Adhiniyam has been passed. The Women Reservation Bill resolved for the women-led development strengthened. So this has been again one of the major focus and important areas जब हम बात करते हैं women-led development. तो climate change में how women can help, their contribution in each and every area, MSME, SHGs में micro level पे how women-led development is again strengthening our democracy, our economic growth. That is important. And even now we're talking about increasing their representation in the political sphere. So definitely this is going to have further multiplier effects all over India and as well as the global level. So Prime Ministers say that God has chosen me for this noble task of giving rights to women. Nari Shakti Vandan Adhiniyam is going to give new energy to women power of our country, which in itself will be a guarantee for our bright future. तो इंडिया कनाडा के बीच में जो इशू है again this we have discussed, can move forward to the explained page. So explained page pe we are the having topic of this again 33% promise in Lok Sabha. Women representation give the numbers, but women's representation it is low in the key positions, professions and sectors. So again यहाँ पे challenge जो है breaking the glass ceiling. So जो key positions हैं वहाँ पे women representation को हम कैसे increase करेंगे, that is important. यहाँ पे 33% reservation मिल जाएगी, but इसकी वजह से we are not going to see मेजर इंक्रीज या मेजर शिफ्ट हेरिन जो मेल डोमिनेटेड पोजीशंस की बात करते हैं तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अगेन 14%, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में दैट इज एट 14.5%, 11 वुमेन देयर अ पार्ट ऑफ इट इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर वुमेन. सो यहाँ पे अगेन वी हैव द ट्रेंड ऑफ the share of women representation. So highest we achieved during 2015, that was 17.8%, and right now it is at 14.5% the share of women in the parliament. So this is, we can say this is one of the lowest जब हम globally compare करते हैं the share of women representation. This we took up in one of the previous lectures as well. So police and security forces में women they just comprise 8% of the share. So female police officers they're just 8% of the total as of January 2021. Then judiciary made 10% in the Supreme Court, higher in the high courts, and only 3 women, मतलब 10% amongst the 29 judges of the Supreme Court as on September 29, 2022. So not just even in parliament, बाकी areas में भी police security में judiciary में भी women representation बहुत low है. Managerial positions में भी only like fewer than 1 in 5 workers they are female. सो यहाँ पे जब हम अगेन बात करते हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन स्टेम एरियाज में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सो वहाँ पे इंडिया इट इज इन रिलेटिवली गुड पोजीशन ग्लोबल लेवल पे व्हेन वी डू द कंपैरिजन. सो यहाँ पे अगेन वी आर हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द शेयर वो थोड़ा हमें सोचने की जरूरत है. ग्लोबल न्यूज की बात करें प्रचंड यूएस एंड चाइना. सो नेपाल यूएस एंड चाइना की अगर हम बात करें तो आफ्टर एड्रेसिंग द यूएनजीए नेपाल प्राइम मिनिस्टर ही हेड्स टू चाइना. सो मोमेंटम इन द टाइज बिटवीन नेपाल एंड चाइना ऑफ लेट वी हैव सीन की जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हुआ है सिंस द बोनोमी एंड द कोऑपरेशन द प्री पैंडेमिक ईयर्स. बट यूएस एंड इंडिया वो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं रीजनल गेम में एंड न्यू दिल्ली विल बी वॉचिंग प्रचंडा इन द बीजिंग क्लोजली ऑल्सो. सो अगेन यहाँ पे कैसे हमारे टाइज आने वाले टाइम में रहेंगे दिस विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन कि नेपाल और चाइना के बीच में रिलेशंस कैसे शेप होंगे आगे कैसे जाएंगे. So view from New Delhi. So India, it has burned its fingers few times in Nepal. Bilateral relations जो हैं, they have witnessed major changes over the years. So कुछ unique fundamental features जो हमारे bilateral relationship के रहे हैं, they are now in retreat. तो वहाँ पे भी again हमें उनका जो influence है वो decline होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो हमारे आर्मी चीफ का भी कहना ये है कि जो open border है with India that poses a threat to the peace, law and order in Nepal. जो गोरखा रिक्रूटमेंट है that is that the independent India gave continuity to, ये हमने रोका नहीं despite like even after independence, that is also now a thing of the past. So disputes over the border that keeps rising. So India US they agree कि coming together with the major communist parties of Nepal and China, this would allow China greater leverage in Nepal. So इसकी वजह से again इंडिया के लिए problems और increase हो सकती है. Leaders of India's ruling dispensation उनका मानना ये है कि India should support the US to contain China in Nepal.
So this could be one of the possible options जो इंडिया के पास है. Again, इसके भी हमें positives negatives पता होना important. So India will be closely watching the Nepal's Prime Minister's visit to China to see how warmly or curtly he's received and how courageously or clearly he puts across Nepal's point of view during the meetings. So 108-foot statue of Shankara looking at Narmada. It's important who was Adi Shankaracharya. So he believed to have lived between 788 and 820 CE. He was born in Kerala's Kaladi and he became a sannyasi at an early age, left his Brahmin household, making his way to Omkeshwara, and he studied under his guru Govind Bhagwat Pada and became a proponent of Advait Vedanta. So these philosophical ideas that are important for us. And he is believed to visited all the important spiritual centers of the time. He is believed to have authored 116 works, including the commentaries on Upanishads, the Brahma Sutra and Gita. So what was the part of the commentaries? क्या ideas उन्होंने share किए, क्या put up किए, वो हमारे लिए important है. So जिस island पे statue located है, मानधता, उसकी importance क्या है? So island नर्मदा पे it is located. Narmada river पे it is home to 2 of the 12 Jyotirlingas, Omkeshwara and Amreshwara. So island it is dotted with Shaivite, Vaishnavite, Jain temples dating back to 14th and 18th centuries. So the name Omkeshwar is derived from the shape of the island, which resembles sacred syllable Om, and the name means Lord of Omkara. So according to Purans, Lord Shiv views the world as an endless pillar of light called the Jyotirlinga. And there are 12 Jyotirlingas. India mein jo sites hain, 12 sites are there which are considered a manifestation of Shiva. So ये सब topic हम already discuss कर चुके हैं. So we'll just move forward. I think the only point I want to raise today regarding the Canada issue. So I believe that I mean I'm just having an opinion. Just give yes or no to it. Shouldn't the government or the MEA specifically prescribe an oath and affirmation letter by all those students, all those workers, all those people who are migrating to these countries, not specifically to Canada, but to different countries for various purposes. So shouldn't the MEA should have a mandatory prescribed in the form of an oath and affirmation that any form of radicalism, if it is found to be done by an Indian in any sort of country against India, so he will be immediately booked, and all the agencies which are working in this regard will have the sovereign power to detain those people and to bring them back to India and to have a custody over them. बट आई थिंक जो आपने पॉइंट सजेस्ट किया है उसमें एथिकल एंगल भी कंसिडर करना चाहिए. व्हाई वी आर टारगेटिंग पीपल? हम इसको, ये जो प्रॉब्लम है इतने सालों से चली आ रही है, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको डिप्लोमेटिक लेवल, कंट्री लेवल पे क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं? लोगों को अटैक करना, या मतलब अटैक इज अ रॉन्ग वर्ड, बट attack is basically taking the precautions to protect the sovereignty. नो, आई डोंट सपोर्ट कि इसको इस लेवल पे या इस तरीके से रिजॉल्व किया जाना चाहिए. अगर अगेन वही मेरा पॉइंट यही रहेगा कि कंट्री टू कंट्री लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका रेजोल्यूशन किया जाना चाहिए. एंड अगेन कनाडा भी जब हम बात करते हैं, कनाडा का जो स्टैंड है, इट बिलीव्स कि इसमें इंडिया का रोल है. जो अभी रिसेंटली जो डेथ हुई है पर्सनालिटी की, सपोर्टेड दिस आइडिया, खालिस्तानी आइडिया. सो उसमें कनाडा इज सेइंग कि उसमें इंडिया का रोल है. सो दैट इज वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग ना. तो डिप्लोमेटिक लेवल हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है. हम वो ये बोल सकते हैं कि इफ कनाडा इज सेइंग दिस थिंग, इट इज अक्यूजिंग इंडिया की, इंडिया का रोल है इन द डेथ, क्योंकि कनाडा इस इशू को एड्रेस नहीं कर रहा है या एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, जो मेजर इशू है, जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है. सो अगेन ये जो आपने सोल्यूशन सजेस्ट किया, मेरे हिसाब से कोई परमानेंट या सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है. यू नीड टू इमेजिन, एक बार सोचना पड़ेगा कि लोगों को क्या रिएक्शन होगा व्हेन दिस थिंग इज पुट अप और दिस इज इम्प्लीमेंटेड. सो अगेन यहाँ पे थोड़ा एथिकल एंगल भी सोचना हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है. दिस इज माय स्टैंड ऑन योर सजेशन. Oh, fine.
Okay, so that's all for the day. Thank you so much for joining us. Do subscribe to the channel and keep watching.